with all of the Vaishnavas. की कृपा से और वैष्णवों के संग में मैं कुछ गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। You can just read it. किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और जो कुछ उनका करे, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। So Srila Prabhupada begins his purport by saying that a real devotee cannot live without Krishna. श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के प्रारंभ में बताते हैं कि जो वास्तविक भक्त है वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। Sometimes we measure Krishna consciousness jagat. This means that we're trying to understand Krishna with our limited time. वास्तविक भक्त कृष्ण भावनामृत के बिना 24 घंटे वो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, उसके बिना वो जीवित Ourselves, not very much. तो अपने लिए कितना लगता है? बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। Because Krishna says, which Srila Prabhupada coined as the peace formula, Bhaktaram Jagatapasam Sarvalokameshwaram Suridam Sarvabhutanam. That these three things will actually, we can actually understand Krishna by these three things. जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बताते हैं, शांति सूत्र जो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, कि उन तीन वस्तुओं से व्यक्ति वास्तविकता में कृष्ण की साधना कर सकता है। That everything is for Krishna. You know, Bhaktaram Jagatapasam means yajna. It doesn't just mean Agnihotra yajna. It means every endeavor that we make. तो उसमें बताया जाता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि जो हम यज्ञ करते हैं, बल्कि यज्ञ का ये मतलब है कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो कृष्ण के लिए समर्पित है। Most of us are working very hard for our family, either trying to maintain our children or please our parents, but we're not always offering it to Krishna. हम में से बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं, या तो अपने परिवार का पालन करने के लिए या माता पिता को खुश करने के लिए, परंतु हम उन सारी क्रियाओं को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं। Pratipadam Pradami does that every step we are looking for Amrita, and that Amrita is Krishna. हर क्षण हर कदम पे हम अमृत की तलाश कर रहे हैं और वो अमृत भगवान कृष्ण है। A few verses back, Krishna says
Amritam chaiva mrityuscha, in verse number 19. I am the nectar for the devotees, and I am death for the non-devotees. कुछ श्लोकों पहले 19 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी हूँ. So we should think of what do I want, nectar or death? तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं या अमरता चाहते हैं. Krishna will always be manifest for us, but we choose in what form he will be manifest. भगवान कृष्ण हमारे सामने हमेशा आएंगे, परंतु हम इसका चुनाव करते हैं कि हम किस रूप में उनको देखना चाहते हैं. So devotees, they want Krishna to be Amrita. जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को अमृत के रूप में देखना चाहते हैं. And therefore, we can actually measure our Krishna consciousness. How much Amrita am I feeling when I serve Krishna in my life? How much nectar am I feeling? तो कृष्ण भावनामृत में हम अपनी प्रगति को इस प्रकार से देख सकते हैं कि कृष्ण की सेवा करने में हम अपने जीवन में कितना प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं. The so-called nectar of this material world always diminishes, and the nectar of Krishna consciousness is Anandam Buddhivardhanam. It's always expanding. इस संसार का जो अमृत बोला जाता है वो हमेशा कम होता रहता है, परंतु कृष्ण भावनामृत का जो अमृत है वो कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है. If we're actually performing devotional service properly, we should be feeling more happiness, more spiritual happiness every day. अगर हम वास्तविकता में कृष्ण भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो हर दिन हम अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. But sometimes we practice religion. परंतु कभी-कभी हम रिलीजन मतलब धार्मिक विश्वास को पालन करते हैं. And those who simply practice religion or dogma, their religious activity is like an insurance policy. जो इस प्रकार से केवल धार्मिक विश्वास को पालन करते हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वो जीवन बीमा के नियमों के समान है. This is my guarantee I won't go to hell. ये इस तरह से है कि वो गारंटी देते हैं कि हम नरक में नहीं जाएंगे. But a devotee doesn't want to convert Krishna into my gatekeeper. परंतु So here Srila Prabhupada emphasizes, how does one think of Krishna 24 hours a day? यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा कर सकता है. By hearing, chanting, remembering, offering, by the 9 processes of devotional service. भक्ति की 9 पद्धति के द्वारा सेवा कर सकता है. And of the 9 processes, 2 of them are essential. They must always be going on. और भक्ति की 9 पद्धति में से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कि हमेशा चलती रहनी चाहिए. Shravanam and Kirtanam. वो है श्रवण और कीर्तन. Whatever stage of devotion we are in, there always must be Shravanam and Kirtanam. भक्ति की जिस किसी भी अवस्था में हम हैं, परंतु श्रवण कीर्तन हमेशा चलना चाहिए. The first 7 of the 9 processes are considered to be establishing our relationship with Krishna. They are part of sadhana bhakti. 9 में से 7 जो पद्धतियां हैं वो साधना भक्ति के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं. The last 2, having friendship with Krishna and surrendering everything to Krishna, they are part of raganuga bhakti. अंतिम 2 जो है भगवान को सब कुछ समर्पण करना और भगवान से मित्रता प्राप्त करना, ये रागानुग भक्ति का हिस्सा माने जाते हैं. In the beginning of Bhagavad Gita, or not in the beginning of the 4th chapter, Krishna tells Arjuna, Saivayam maya tedyam yoga bhakta puratanaha bhakto sime sakachati rahasyamitam uttama. He says that today I'm going to again explain that ancient process of yoga. चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आज मैं तुम्हें फिर से वो पारंपरिक प्राचीन विज्ञान बताने वाला हूँ.
And I am doing it for two reasons. और मैं ये दो कारणों से कर रहा हूँ। First, because you're my devotee, and secondly, because you are my friend. पहला क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और दूसरा कि आप तुम मेरे मित्र भी हो। To the devotees, Krishna tells them what to do, how to serve him. भक्तों को भगवान बताते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। But to a friend, rahasyam itam uttamam, Krishna explains the deepest secrets about his service. और अपने मित्रों को भगवान भक्ति करने के सबसे रहस्यमयी तत्व बताते हैं। A devotee who is actually a friend of Krishna doesn't even think that he's serving Krishna. भगवान के भक्त जो मित्र रूप में उनके पास होते हैं वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। They are caring for Krishna, fed, and Krishna will be happy. जैसे यशोदा माँ है, वो ये नहीं सोचती है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। उनके मन में ये विचार होता है कि मैं कृष्ण की देखभाल कर रही हूँ और कृष्ण को अच्छे से रहना चाहिए। When Krishna was holding up Govardhan, she wasn't thinking, oh, Krishna's protecting me, or she was thinking, Krishna's arm, his finger is so tender, his arm is so delicate, he's getting tired, what can we do? तो जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो यशोदा माँ ये नहीं सोच रही थी कि ये कृष्ण ने हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। वो ये सोच रहे थे कि कृष्ण की उंगली और कृष्ण के हाथ इतने कोमल हैं, वो कैसे इतना वजन उठा रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। Just like when Lord Chaitanya was passing through South India, he met one Brahmin, and the Brahmin invited him for lunch. जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं और वो ब्राह्मण उनको मध्याह्न भोजन के लिए बुलाते हैं। And when he arrived the next day for lunch, there was nothing cooked, nothing was there. जब वो मध्याह्न भोजन के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। The Brahmin was sitting down, he with his head in his hands, lamenting. वो ब्राह्मण वहाँ पे बैठा हुआ था और अपने हाथों को सिर पे रख के वो दुख कर रहा था। So Chaitanya Mahaprabhu said, what happened to lunch? चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि भोजन का क्या होगा? And he said, how can I think about lunch when the Ravana has kidnapped Sita? तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं ये भोजन के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। He was so absorbed in Leela that even though it's something that happened millions of years ago, it was happening right that moment for him. तो भगवान की लीला में इतने डूबे हुए थे कि जो घटना कितने लाखों साल पहले हो चुकी है उसमें अभी तक वो सोच रहे थे कि अभी भी वो लीला चल रही है। So when we're actually chanting the holy name of the Lord purely, without any offenses, then we can actually enter into the Leela of the Lord. जब हम भगवान का नाम पूर्ण रूप से शुद्धता से लेते हैं तो वास्तविकता में हम भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। There is no the Lord's Leela is not governed by time. भगवान की लीलाएं समय के द्वारा निर्धारित नहीं होती। The Lord's Leela is that actually every day in Vrindavan, even right now, Krishna is performing his pastimes. श्रील प्रभुपाद ने कई बार बताया कि भगवान कृष्ण अभी भी वृंदावन में हर दिन लीलाएं कर रहे हैं। A pure devotee can see this, but we cannot see. एक शुद्ध भक्त ये देख सकता है, हम नहीं देख सकते। We see some old buildings, some pigs eating stool, some dogs running around, and some people making a lot of noise. हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं टूटे हुए कोई घर है, कभी कुत्ता वहाँ पे देखते हैं, सूअर को गंदगी करते हुए देखते हैं। This is called pradamaya. इसको बोला जाता है Pradamaya. प्रौढ़मय। Pradamaya means it's a special potency of Maya that covers the Dham. ये प्रौढ़मय माया की एक ऐसी शक्ति को बोला जाता है जो धाम को ढक लेती है। And only when one is very determined
can one actually see the Dham. जब कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होता है तभी वो धाम को देख सकता है. So here the qualification for having that consciousness is given in this verse. इस श्लोक में ये बताया गया है कि वो चेतना कैसे प्राप्त की जाए. Ananya chinta chitite koriya aikya arana korino mani asha. Nothing else is in my mind. My intelligence is totally absorbed in the instructions coming from the lotus mouth of the spiritual master. जैसे कि गुरु पूजा में हम लाते हैं कि हम हमारी जिंदगी में हमारे सारी जिंदगी गुरु के आदेश पे आधारित है, उसके अलावा हमारी और कोई इच्छा नहीं है. And then he says, ye jana paryupasyate. Pariupasyate means that one is totally absorbed in worshiping Krishna in all of one's words, thoughts and activities. परिउपासना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान कृष्ण के पूजन में लगा हुआ है, अपने शरीर के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा. Tesham nitya abhiyuktanam. Nitya abhiyuktanam means that I can never be separated from devotional service. उनके लिए ऐसा बताया जाता है कि वो भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, भक्ति से कभी अलग नहीं हो सकते. And therefore, Srila Prabhupada says here that this kind of devotee always approaches Krishna without any difficulty. और ऐसे भक्त इसलिए इसमें बताया गया है कि ऐसे भक्त बिना किसी कठिनाई के भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं. Such a devotee is later on at the end of the 11th chapter. Krishna basically says the same thing, but gives a deeper understanding. 11वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण इसी वस्तु को बताते हैं, परंतु और गहराई से उसको समझाते हैं. This is what you should do, Arjuna. This makes it possible to understand me. वहाँ पे भगवान ऐसा बताते हैं कि ऐसी भक्ति जिसमें भगवत चेतना के अलावा और कुछ नहीं हो, उसी भक्ति के द्वारा वो अर्जुन भगवान को समझ सकते हैं. क्या तुम ज्याष्टुम च तत्वेना प्रविष्टम चा परंतपा. That when you perform this undivided devotional service, you will know me, you will see me, and you will enter into all the mysteries, all the understandings of who I am. तो वहाँ पे भगवान बताते हैं कि जब तुम अनन्य भक्ति करते हो तो तुम मुझे समझ सकते हो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा देख सकते हो, मेरा साक्षात दर्शन भी कर सकते हो, मेरे ज्ञान के रहस्य को भी समझ सकते हो. Krishna says in the 9th chapter that Raja Vidya Raja Guyam, that first when you understand that there is no knowledge beyond this knowledge of Bhagavad Gita, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान समझना चाहिए कि भगवद गीता से बड़ा ज्ञान और कहीं नहीं है. Then Rajaguyam, then everything will be revealed to you. तब अगर आप ये समझेंगे तो संसार के सारे रहस्य आपके सामने समझ जाएंगे. Sometimes we want to try to understand Krishna without accepting what Krishna has already given to us. कभी-कभी हम भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं, परंतु कृष्ण ने जो हमें दिया है उसके द्वारा हम नहीं समझते. Just like in Damodar Leela, when Mother Yashoda is trying to bind Krishna, it's always short by 2 fingers. जिस प्रकार से दामोदर लीला में जब यशोदा माँ भगवान और उनके भक्त के बीच में जो शाश्वत समय से जो भक्ति का आदान प्रदान होता है उसको प्रदर्शित करते हैं. First is Krishna's mercy. Krishna is always giving his mercy. उसमें से पहले अंगुली भगवान की कृपा को प्रदर्शित करती है. Just that sometimes that mercy takes a form that is not particularly comfortable for us. जिस प्रकार से कभी-कभी वो इस प्रकार का रूप ग्रहण करते हैं जिसको देख के हम उतने ज़्यादा आरामदायक अनुभव नहीं करते हैं.
But that is the best mercy परंतु वो बहुत विशेष कृपा है, because it forces us to advance. क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए मजबूर करती है। Just like Krishna Prasadam is Krishna's mercy, and we like it very much. जैसे कृष्ण का प्रसाद भगवान कृष्ण की कृपा है और हम उसको बहुत पसंद करते हैं। But if we take too much of that mercy, we might get sick. अगर हम बहुत ज़्यादा उस कृपा को ले लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। But Krishna's mercy in the form of some difficulty, the more we take, the more we advance. परंतु जब कृष्ण की कृपा किसी कठिनाई के रूप में हमारे सामने आती है तो जितना हम लेते हैं उतना हम भक्ति में प्रगति करते हैं। And that is why Shukadeva Goswami said that Yasyaham anugrinami harishe tat shanai, that when Krishna wants to favor one very specially, he takes away everything they have. इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण किसी पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो उसके पास से उसकी सारी चीजें छुड़ा लेते हैं। And then his family members will abandon him, and then he will have nothing left except Krishna. और फिर जब उसके पास से सब कुछ छुड़ा लेते हैं तो उसके घर वाले उसको भगा देते हैं, तो उसके पास कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बचता है। This happened to the Avanti Brahmin. ये अवंती ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ था। He was very greedy Brahmin. वो एक बहुत लोभी ब्राह्मण था। We were speaking about this morning, that a Kripana, he was a Kripana, miserly person. आज सुबह भी हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो एक कृपण था, बहुत कंजूस व्यक्ति। He wouldn't even give his family members like basic essential things for their happiness. वो अपने घर वालों के लिए आधारभूत वस्तुएं जो की जरूरत होती है वो भी नहीं देता था। He wouldn't give them any new clothing or anything nice. Just give them a little something to eat and a place to sleep. That's all. वो उनको कुछ अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं देता था, केवल थोड़ा बहुत खाने के लिए और रहने के लिए कोई जगह दे देता था। And he was doing business, which is not even the activity of a Brahmin. और वो व्यापार करता था जो कि ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कार्य नहीं है। And he would make a lot of money, but he would hoard it, he would keep it, he wouldn't distribute it. वो बहुत पैसे भी कमाते थे परंतु उसको छुपा के रखते थे, उसको किसी को देते नहीं थे। So by destiny, people got tired of being treated badly by him, and they cheated him and took away all of his money. तो बाद में भाग्य से ऐसा हुआ कि लोग बहुत परेशान हो गए उससे और उससे जबरदस्ती उसका सारा पैसा छीन लिया धोखा देके। And then he went to his family and he said, "Oh, my dear family, please help me. Now I don't have anything." जब उसके पास पैसे नहीं बचे वो अपने घर वालों के पास जाके बोलता है कि मुझे मदद करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। And they said, "Why should we help you? You never helped us." And they kicked him out of the house. तो घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तुमने कभी हमारी मदद नहीं की। इस तरह से उन्होंने उसको घर से भगा दिया। He was lamenting लात मार के भगा दिया। things from other people. He began to feel peaceful. तो उसके बाद उसको शांति के अनुभव होने लगा, क्योंकि उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी पैसे कमाने के लिए, किसी से छुपाना नहीं पड़ता था। And then he said, "This must be Krishna's mercy." तब उसने बोला कि ये वास्तविकता में कृष्ण की कृपा है। I'm completely detached. I have nothing. मैं पूरी तरह से विरक्त हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। Now I can worship the Lord without any impediment. अभी मैं बिना किसी व्यवधान के भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। So he became totally detached, and he began to wander around as a mendicant. तो वो पूरी तरह से विरक्त हो गए और फिर एक भिखारी के जैसे सब जगह घूमने लगे। But everybody said, "Oh, he's just a failure in life." No, that's why. He's not no saintly person. He's just a failure. बहुत सारे लोगों ने बोलना चालू किया कि ये कोई साधु व्यक्ति नहीं है, ये तो जिंदगी में फेल हो गया, इसलिए ऐसा घूम रहा है। Sometimes people think that about our devotees, brahmacharis and sannyasis, vanaprasthas. Oh, they couldn't make it in the real world. No. बहुत सारे लोग अभी भी ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ को देख के यही बोलते हैं कि ये उस दुनिया में कुछ ज्यादा कर नहीं सके इसलिए यहाँ पे आ गए। But a devotee doesn't care what they think. No. भक्त उसका कोई परवाह नहीं करते। Of course, we want people to have a good
a good image of Krishna consciousness. But ultimately, a real devotee simply wants to give them Krishna. हम ऐसा चाहते भी हैं कि कुछ भक्त अच्छे हों, जिनका इमेज अच्छा हो, परंतु वास्तविक भक्त वही है जो कृष्ण सभी को कृष्ण भावना मत प्रदान करना चाहता है. Just like when Chaitanya Mahaprabhu was speaking to the Mayavadi sannyasis, he told them that my spiritual master taught me the Maha Mantra. जैसे जब चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे एक महामंत्र सिखाया था. He said, "Tumi murkya tomara nahika vedantadikar." That you are just a fool. You have no ability to understand Vedanta. तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ, मतलब तुम मूर्ख हो और तुम्हें वेदांत समझने का कोई अधिकार नहीं है. Krishna mantra japa sada a mantra sar. He said, you take this Krishna mantra, chant it all the time. This is the essence of all the Vedas. तो गुरु ने ऐसा कहा कि तुम ये कृष्ण मंत्र स्वीकार करो और इसको हमेशा जप करो. यही सारे शास्त्रों का सार है. And Chaitanya Mahaprabhu began to chant, and then he went back to Ishwara Puri and he said, what have you done? चैतन्य महाप्रभु ने जब नाम जप चालू किया तो वापस जाके ईश्वर पुरी से पूछा कि आपने क्या किया? I think that I've lost all my composure. I can't think of anything except chanting this mantra. उन्होंने बोला कि मैं और कुछ काम कर ही नहीं पाता हूँ, हमेशा ये मंत्र ही करता रहता हूँ. You've taken away, otherwise he was Nimai Pandit, very proud of his knowledge. And he said, now you've taken away everything. What will I do? What hope is there for me? उन्होंने बोला गुरु से जाके कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या आशा है? And Ishwara Puri smiled. He said, you are very fortunate. और ईश्वर पुरी ने बहुत प्रसन्न होकर बोला कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं. Most people chant and they don't feel anything. बहुत सारे लोग जप करते हैं, उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है. But you are feeling ecstasy. There are 8 types of ecstasy that manifest on the body, and this is happening to you. परंतु तुम्हें बहुत सुख का अनुभव प्राप्त हो रहा है. अष्ट सात्विक विकार भी तुम्हारे अंदर अनुभव हो रहे हैं. ये बहुत सौभाग्य है तुम्हारा. He said, what you are feeling is even beyond liberation. जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वो मुक्ति से भी बड़ा है. And then he said, and then Chaitanya Mahaprabhu said, my spiritual master spoke one verse, which is the essence of the whole Srimad Bhagavatam. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे गुरु ने एक श्लोक बताया जो कि सारे शास्त्रों का सार है. Evam Bhataswa Priya Nama Kirtya. That if one develops the determination to make the holy name of Krishna the most dear thing to his heart, the chanting of the holy name, the most dear activity that one can possibly do. अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि भगवान का नाम लेना उसके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय कार्य है. Chitanurago Druta Chitta Uchchai. And then spontaneous desire will manifest in the heart, and the heart will melt by the influence of the holy name. तो अगर कोई इस तरह से नाम जप करता है तो उसका हृदय द्रवित होगा और उसको भगवत प्रेम आकर्षण प्राप्त होगा. Asatyito roditi rauti gaya. And then one will smile and one will feel agitation and one will chant very loudly. उस अवस्था में बहुत जोर से जप करना प्रारंभ करेगा, उसको कंपन भी अनुभव होगा और बहुत खुशी भी अनुभव होगी. Yunmadavan riyati bahalokya. And one will feel transcendental madness and begin to dance and chant, not caring for what others think. और वो दिव्य उन्माद की अवस्था को प्राप्त करेगा, वो नृत्य करेगा, कीर्तन करेगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा. So this is these are things that happen to our heart and to our consciousness when we have this state of being which is described here in this verse. तो वो अवस्था में प्राप्त होगी जब हम इस श्लोक में जो बताया गया है उसका पालन करेंगे. And the last line is a very important line.
और अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उसको श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में बहुत अच्छे से समझाते हैं। Prabhupada says here, the Lord helps the devotee achieve Krishna consciousness by yoga. In other words, devotee becomes Krishna conscious, the Lord preserves it. और जब वो भक्त कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है तो भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। Most people, when they read this verse, they think, yoga, the Lord will give me everything I want. बहुत सारे लोग जब इस श्लोक को पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं योग क्षेमम का मतलब है It's nice, he will protect my car, he will protect this understanding. I was explaining the other day the story of Arjunacharya. मैं किसी और दिन अर्जुन आचार्य की कथा बता रहा था। Arjunacharya was copying the Bhagavad Gita, and he came to this verse and he said, how can this be? Yogakshemam bahamyaham. It must be yogakshemam karamyaham, that it gets done. Not that he does it, not aham, but it gets done. तो अर्जुनाचार्य जब इस श्लोक को पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि योग क्षेमम महाम्यहम की जगह योग क्षेमम करोम्यहम। That does all this. उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, तो उसमें से कोई एक शक्ति एक कार्य करेगी। Tasya karyam karanam cha vidyate. Krishna has nothing to do, it means he has nothing to do with this material world. और जब हम बोलते हैं कि कृष्ण को और कुछ कार्य करने के लिए नहीं है, उसका ये मतलब होता है कि इस भौतिक संसार में कृष्ण और कुछ भौतिक कार्य नहीं करते हैं। Even in the form of Mahavishnu manifesting unlimited universes, how does he do it? महाविष्णु जो कि जिनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, किस प्रकार से वो ये कार्य करते हैं? Sleeping. वो सोते हैं। How much effort do we need to sleep? कितना हमें सोने के लिए कितना काम करने की जरूरत पड़ती है? Unless you're an insomniac, then you may have some problems. No? जब तक आपको अनिद्रा नहीं हो तब तक आपको सोने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। But normally, we don't have any problems sleeping. No? और सोने में हमें कोई मेहनत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। So everything that's happening in this material world, except for Krishna's Leela, is so routine that the Lord has to make absolutely no effort. कृष्ण लीला के अलावा इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो इतना ज़्यादा रूटीन है कि भगवान को सोते-सोते वो काम करते हैं, उनको कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। And Krishna, in his Leela, he's not at all interested in the material world. भगवान कृष्ण अपनी लीला में इस भौतिक संसार में कोई उनका इच्छा नहीं है। He's so uninterested that he brings the spiritual world with him. वो भौतिक संसार में इतनी कम इच्छा होती है कि जब वो यहाँ आते हैं तो अपना आध्यात्मिक संसार साथ में लेके आते हैं। Just like when we're traveling, we take our suitcase and all our necessities with us. जैसे हम यात्रा करते हैं तो अपना सूटकेस और बाकी सब सामान साथ में लेके जाते हैं। So when Krishna is traveling, he takes unlimited devotees with him. जब कृष्ण यात्रा करते हैं तो बहुत सारे भक्तों को साथ में लेके चलते हैं। Just like it even says in Krishna Leela, Ugrasena had millions of bodyguards. ऐसा बताते हैं कृष्ण लीला में कि उग्रसेन के लाखों संरक्षक थे। So where did they come from? वो सभी कहाँ से आए थे? Chaitanya Mahaprabhu, when he marched on the Chand Kazi's house, there were millions and millions of devotees. चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी के घर गए थे तो लाखों भक्त उनके साथ गए थे। And where did they come from? वो सब कहाँ से आए? At that point, his Sankirtan movement had not really manifested yet, not fully. उस समय तो संकीर्तन का जो आंदोलन था पूरी तरह से प्रारंभ भी नहीं हुआ था। There were only a few hundred devotees. कुछ सौ भक्त उस समय थे। But he brings the whole spiritual world with him, and there were millions of devotees. तो चैतन्य महाप्रभु पूरे आध्यात्मिक संसार को साथ में लेके आ गए, इसलिए लाखों भक्त उनके साथ गए थे। So, but Srila Prabhupada says in the introduction to the teachings of Lord Kapila Dev that when a devotee cries to Krishna like a baby crying for his mother, that's when Krishna personally takes charge of your life. तो भगवान कपिल की शिक्षा पुस्तक की भूमिका में प्रभुपाद जी बताते हैं
कि जब कोई भक्त भगवान के लिए उसी प्रकार से विलाप करता है जैसे छोटा बच्चा माँ के प्रति माँ के लिए रोता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। Krishna, who manifests himself as Mahavishnu to create unlimited universes, he takes personal interest in the life of his surrendered devotee. भगवान कृष्ण जो महाविष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, वो ही उस भक्त के जीवन में स्वयं उसको देखभाल करते हैं, जो कि उनके लिए सेवा करने का प्रयास करता है। I mean, many religions around the world, they think that, oh yes, God is really like totally interested in what I'm doing, just waiting for some opportunity to give me some blessing or some material asset. बहुत सारे धर्मों में लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो मेरे जीवन में जो मैं चाहूँ वो देने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी भौतिक वस्तु भगवान मुझे देना चाहते हैं। So unfortunately, they will never understand the Supreme Personality of Godhead. दुर्भाग्य से वो लोग भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। So Arjunacharya, he was contemplating this. He went to take his bath. जब अर्जुनाचार्य इस प्रकार से इस श्लोक के बारे में सोच रहे थे, तो सोचते सोचते वो स्नान करने के लिए गए। And while he was there, two young boys came to his house and brought all kinds of foodstuff, grains, ghee, fruits, vegetables. जब वो बाहर गए तो उस समय दो बच्चे उनके घर आते हैं, बहुत सारा सामान लेके, दूध, फल, अनाज, दाल, सब कुछ लेके आते हैं। And they told his wife that, oh, your husband sent this for you. उनकी अर्जुनाचार्य की पत्नी से आके बोलते हैं कि आपके पति ने ये सब कुछ भेजा है। She was bewildered. My husband has no money. We're poor. और वो पत्नी सोचती है कि मेरे पति के पास कोई पैसा नहीं है, वो कैसे भेजेंगे? So they said, no, he sent us. He was so insistent that he hit me on the back to make sure that I brought these things to you. तो उन दोनों बालकों ने बोला कि नहीं, उन्होंने आपके पति नहीं भेजे हैं, और वो हमें इतना ज़्यादा बोल रहे थे लाने के लिए कि हमें पीट कर उन्होंने मारा कि हमें लेके आना चाहिए इसको। And the boy turned around, showed his back. He had a big mark on his back. तो दोनों ने अपने पीठ को दिखाया, पीठ पे बहुत घाव का निशान था। And she was thinking, oh, my husband would never do that, but this boy he has a mark. And she was bewildered. तो पत्नी सोच रही थी कि नहीं, मेरे पति तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, परंतु बच्चे की पीठ पे तो घाव था, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। But then she invited them for lunch, and they said, no, he may hit us again. We're leaving. तो पत्नी ने उनको फिर से भोजन के लिए बुलाया, तो उन्होंने बोला नहीं, हम अगर यहाँ रुकेंगे तो हमें फिर से वो मार सकते हैं, आपके पति। So he came home and saw this big feast. तो जब ऐसा बोल के बच्चे चले गए, जब अर्जुनाचार्य वापस आते हैं तो देखते हैं घर में बहुत सारे पकवान बने हुए थे। He said, where did you get the money for all these ingredients? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब खरीदने के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले? And she said, you sent it. पत्नी ने बोला कि आपने तो भेजे थे। And so he said, so she explained, and he said, what do these boys look like? तो जब पत्नी ने ऐसा बताया तो उन्होंने पूछा कि वो लड़के जो आए थे वो कैसे लगते थे? He said, well, she said one had a very dark complexion and the other one was very white. तो पत्नी ने बताया कि एक जो थे वो बादलों के समान थे, सांवले थे, और दूसरे बहुत गोरे थे। And he bowed down to her and he said, you are the most fortunate woman in the world. That was Krishna and Balaram. और वो अपनी पत्नी को प्रणाम करके बोलते हैं कि तुम इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हो, क्योंकि वो दोनों बालक कृष्ण बलराम थे। And he could understand that the mark on Krishna's back was when he took his pen and crossed out the word in the Bhagavad Gita. वो उनको समझ में आया कि भगवान कृष्ण की पीठ पे घाव का निशान था जब उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक को अपनी पेंसिल से उन्होंने काट दिया था। So he went back, changed it to the original form. तो उन्होंने उस श्लोक को जो कटा हुआ श्लोक था उसको बदल के वास्तविक रूप में उसको कर दिया। So we should never interpret the Bhagavad Gita according to our limited intelligence. तो इसलिए हमें भगवद गीता को अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा कभी भी बदलने का या समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। We should never allow our mind to contaminate the purity of Bhagavad Gita with our desires for karma or jnana or yoga. हमारी जो कर्म, ज्ञान और योग करने की इच्छा है या ये जो गंदगी है हमारे दिमाग में, उसके आधार पर हमें भगवद गीता को कभी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। Krishna Bhakta Nishkam
Ataiva Shanta Bhukti Mukti Siddhikam Shakali Shanta. That a devotee of Krishna is always peaceful because they have no desire other than to please Krishna. भगवान कृष्ण के भक्त बहुत शांत रहते हैं क्योंकि उनको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होगी। But the yogis, the karmis, and the jnanis, they are never peaceful because they always want to take something from Krishna. परंतु योगी कर्मी और ज्ञानी कभी भी शांत नहीं होते हैं क्योंकि वो हमेशा कृष्ण से कुछ लेना चाहते हैं। Even in the Christian Bible it says, better to give than receive. No. Better to give than to receive. इस तरह से लिखा है कि लेने से देना ज़्यादा अच्छा है। In other words, that service is the natural condition of the soul. वास्तविकता में सेवा करना आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है। So when we can actually have that desire just to give to Krishna, then we will be unlimitedly happy. हमेशा हम कृष्ण से कुछ ना कुछ मांगने के पीछे लगे रहेंगे। So, but this verse. और इस श्लोक में ऐसा है कि अगर हम भगवान कृष्ण पे विश्वास करेंगे और उस विश्वास के आधार पर कार्य करेंगे तो हमारी जिंदगी के सभी कार्य भगवान उसकी देखभाल करेंगे। This is having faith in the Lord. इसको भगवान के ऊपर श्रद्धा बोला जाता है। Mahaprabhu said, Shraddha Sabde Vishvasya Kahe Sudrida Nishtoy Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoy. That real faith means the unflinching conviction that just by serving Krishna, every subsidiary activity will be taken care of. चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रद्धा का मतलब है कि अगर कोई किसी को ये दृढ़ संकल्प है कि कृष्ण भक्ति करने से सारी वस्तुओं की देखभाल हो सकती है, इसको श्रद्धा बोला जाता है। Of course, that doesn't mean blind faith. उसका ये मतलब नहीं है कि अंधी श्रद्धा करें। It means that everything we do, if we do it for Krishna, then it will have a sublime effect. इसका मतलब है कि हम जो भी करते हैं अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। And even the most ordinary mundane thing can be offered to Krishna. और बहुत सामान्य वस्तुएं भी भगवान कृष्ण को समर्पित की जा सकती हैं। Just like if you're one time Srila Prabhupada भगवान के शरीर के सफाई के जैसा है। And therefore anything we do in our life, if we dedicate it to Krishna, it is just like serving the Lord directly. तो हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं अगर हम भगवान कृष्ण के लिए Consciousness is when I want to please Krishna, then everything will be blissful in my life. अगर हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि हम भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे। So these are some thoughts on this particular verse of Bhagavad Gita. तो ये भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर कुछ विचार हैं। I'll stop here if there's any questions or comments. मैं यहाँ पे विराम करता हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes. Hare Krishna Maharaj, we hear a lot of Krishna Katha and we understand that we should dedicate our life 24 hours for Krishna. Still, we fall from our natural position and we somehow or other indulge in sense gratification. So, how to understand that we should dedicate our life 24 hours, not indulging in sense gratification even for a moment. तो प्रश्न है कि हम बहुत सारी कृष्ण कथा बहुत सारा सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, उसके बाद भी बार ऐसा होता है कि हम इंद्रिय भोग में डूब जाते हैं। तो कैसे ऐसा करें कि हम कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्मुख हों, इंद्रिय भोग की तरफ ना जाएं। When Srila Prabhupada he translates the Shikshastikam, Ayananda Tanucho Kinkaram, Patitam, that he says somehow or another. जब श्रील प्रभुपाद शिक्षाष्टकम के 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं तो उस श्लोक में पतितम आता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी भी तरह से हम पतित हुए। So somehow or another means that
And Srila Prabhupada said so many times that the soul is so small and Maya is so powerful that somehow or another the soul falls under the influence of Maya. इसका मतलब है कि आत्मा वास्तविकता में बहुत सूक्ष्म है और माया बहुत शक्तिशाली है, तो आत्मा माया के संपर्क में आके पतित हो जाता है. So anyone who understands that the nature of Vaikuntha or the nature of Goloka Vrindavan understands that somehow or another means that we are nityabadha, that we are destined to be in this material world. तो जो भी वैकुंठ और वहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि ऐसी अवस्था नित्यबद्ध कहलाती है. लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस प्रकार से संसार में बंधे हुए हैं. There are two kinds of jivas. दो प्रकार के जीव होते हैं, Nitya Siddha and Nitya Bhatha. नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध. Nitya Siddha means they cannot fall. नित्य सिद्ध का मतलब है जिनका पतन नहीं हो सकता. And Nitya Bhatha means they have a choice. नित्य बद्ध का अर्थ होता है कि उनके पास विकल्प होता है. Both of them have to exist so that Krishna is complete. दोनों इस संसार में रहते हैं जिससे कि कृष्ण उस कारण से कृष्ण पूर्ण कहलाते हैं. If everyone is Nitya Siddha, then the material world cannot exist. अगर सभी नित्य सिद्ध होंगे तो कोई भौतिक संसार का अस्तित्व नहीं होगा. And the material world, just like Vishnu has two of his arms are for blessing and two of his arms are for fighting. भौतिक संसार को ऐसे समझ सकते हैं जैसे भगवान विष्णु के दो भुजाएं आशीर्वाद देने के लिए हैं और दो भुजाएं दंड देने के लिए, युद्ध करने के लिए. So for Krishna's manifestation to be complete, there must be the option of only loving him and the option of not loving him. तो भगवान कृष्ण की पूर्णता तब अनुभव होगी जब कृष्ण को प्रेम करने का भी विकल्प होगा और कृष्ण को प्रेम नहीं करने का भी विकल्प होगा. But Bhaktivinoda Thakur says, in our conditioned state, we can't understand perfectly how the soul chooses not to be with Krishna. भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हमारी बद्ध अवस्था में ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों आत्मा ने कृष्ण की सेवा करने का विकल्प को छोड़ दिया. Because we see everything as having a beginning and an end. क्योंकि हम हर वस्तु को इस प्रकार से देखते हैं कि उसका प्रारंभ हुआ था और उसका अंत होगा. We cannot think in terms of eternity. हम कभी भी अनंत समय के अस्तित्व को नहीं सोच पाते. So therefore sometimes Srila Prabhupada explained that the soul cannot fall. That is Nitya Siddha. इसलिए कभी-कभी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसी आत्मा को नित्य सिद्ध बोलते हैं जिसका कभी पतन नहीं होता. And sometimes Srila Prabhupada explained that the soul has independence and can separate itself from Krishna. और कभी-कभी प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा के पास स्वतंत्र इच्छा होती है और वो कृष्ण से अलग हो सकती है. And sometimes Srila Prabhupada explained that this is all just like a dream and actually we can never happen. What happens to me? एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि अगर मैं आध्यात्मिक संसार में वैगन हूँ और कृष्ण ने मुझे खा लिया तो क्या होगा? And Prabhupada said, when you get there you will find out. प्रभुपाद ने बोला कि जब वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा. So how can we understand this? No, everything is chintamani, but Krishna is eating somehow. What is he eating? How does that? These things are beyond our ability to understand. तो ये समझना कठिन है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चिंतामणि है परंतु कृष्ण भोजन तो करते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं? तो ये समझना हमारे बुद्धि से परे है. Logic can only take us to a certain point. तर्क जो है वो हमें एक स्थिति से ऊपर तक नहीं ले जा सकता. And Shastra can only take us to a certain point. केवल शास्त्र ही हमें एक उस स्थान तक ले जा सकते हैं. And philosophy can only take us to a certain point. और सिद्धांत भी हमें एक स्थान तक ले जा सकते हैं. Therefore it said, Tarko Pratishtam Shtayo Bibinam Nashavishayasamatam Nabinam, that, but if you want to know the truth, Mahajani Nagata Sapanta, you just hear
from the self-realized soul, and you will understand what you need to know. तो इसलिए अगर आपको समझना है तो जो आत्म साक्षात्कारी भक्त हैं उनसे समझने से हम सब कुछ समझ सकते हैं. We always try to figure to become enlightened. तो जब हम श्रील प्रभुपाद और वैष्णवों से सुनते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि की प्राप्ति होती है. So this ascending process, with my little brain, I try to figure everything out. It causes too much anxiety. तो ये आरोही क्रम में अगर हम अपने दिमाग से सब कुछ समझना चाहेंगे तो बहुत कठिनाई होगी. But when I turn off my brain and open my ears, then I can understand properly. जब मैं दिमाग को मैं बंद करता हूँ, consciousness, we are getting all the material facilities, even which we are not getting outside. Those facilities we are getting inside. So how should we consider, is this Krishna's favor or he is not giving his real mercy to us? प्रश्न है कि हम जैसा कि आपने महाराज आपने बताया कि जब कृष्ण विशेष कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, और हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति करने के बाद हमें अभी जितना पहले हमें मिलता था उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो रहा है अभी. तो कैसे समझ सकते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है कि क्या है? If we see that Srila Prabhupada had to go through so much difficulty to start this movement, we should be thinking, when will it happen to me? Not, oh, Krishna is giving me something. Krishna is giving us the facility to spread Lord Chaitanya's movement. We shouldn't think that he's giving something to me. He's engaging us. He's giving us the opportunity to use his energy. In my area, we're not getting anything. We're fully realizing Harisye, Tatsanam Janam. जैसे कि मेरा जो जोन है उस स्थान में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इस श्लोक का मतलब समझ पा रहे हैं. So, but this everything goes in cycles. Sometimes Krishna gives us everything, sometimes Krishna takes it away. And just to see, he doesn't have to see, he knows, but just so we can see what is the condition of our heart. तो ये चक्र के समान है, कभी कृष्ण देते हैं कभी छीन लेते हैं, और वो जानते हैं, वो हमें ऐसा अनुभव कराना चाहते हैं कि हमारी मनोदशा कैसी है हर अवस्था में. When Krishna is testing us, it's not that he needs to figure out something, he's showing us what is the state of my consciousness. जब कृष्ण Easy, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कृष्ण उसका व्यवस्था करेंगे, वो सब कुछ छीन भी सकते हैं आसानी से. Actually, we shouldn't think that Krishna is giving me something. We should think that Krishna is facilitating his Sankirtan movement, and he's giving me the opportunity to participate. तो हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं और हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हम उसमें हिस्सा ले सकें. And therefore, if we carefully use everything very, very precisely only for his service, then he may give more. तो अगर हम बहुत सावधानीपूर्वक जो भी हमारे पास आ रहा है वो कृष्ण की सेवा में ही लगाते हैं. And he gives more, and we start thinking, oh, he's doing that because I'm such a good devotee, then that is the most dangerous thing. क्योंकि जब हम घमंडी हैं और अगर हमें वो कुछ देते हैं तो हमारे मन में विचार आएगा कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ कि कृष्ण मुझे सब कुछ दे रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए. It means that Krishna has decided this fool is just try to sincerely use whatever facility or lack of facility that Krishna gives us, and happily be very happy that this is Krishna's mercy. तो हमें समझना चाहिए कि हमें हो सकता है कभी सुविधाएं मिले, कभी सुविधाओं की कमी हो, परंतु जो भी है वो कृष्ण की कृपा के रूप में समझना चाहिए. Prabhuji, how we can remember Krishna 24/7 by doing our own worldly activities? Because even in Gita, Krishna says Arjuna that to perform his duties. So we have also responsibilities for family, for society, for parents. So how we can remember him or do his prayer 24 hours by doing our responsibilities?
तो प्रश्न है कि हम किस प्रकार से 24 घंटे 7 दिन भगवान कृष्ण का नाम भी ले सकते हैं और संसार में अपने कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्य करने के लिए भी बोला है। तो दोनों कार्यों को कैसे किया जा सकता है? Our first responsibility is to chant the holy name of Krishna. हमारा पहला कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण के नामों का जप करें। Then we can properly take care of our family. तब हम अपने घर वालों की वास्तविक देखभाल कर सकते हैं। Taking care of the family doesn't mean give them clothing and give them food. That's secondary. घर वालों की देखभाल करने का ये मतलब नहीं है उनको पैसा देना, उनको कपड़े देना, ये प्राथमिक नहीं है, दूसरा उद्देश्य है। Taking care of the family means have a nice altar, which is the center of my home. घर की देखभाल करने का मतलब है घर में एक बहुत अच्छा मंदिर होना चाहिए जो कि घर का केंद्र बिंदु होना चाहिए। Not that the 52-inch screen is the center of my home. 52 इंच की जो स्क्रीन है टेलीविजन, वो हमारे घर का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। Many years ago, when they used to have the old-style television, one family invited me. They said, "We have some deities. We'd like you to install them." जब बहुत समय पहले जब छोटी-छोटी टेलीविजन होती थी, उस समय एक फैमिली ने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया था। वो उन्होंने बोला था कि उनके पास एक विग्रह है, उस विग्रह की स्थापना वो महाराज से करवाना चाहते थे। So I looked around. I said, "Bring me some cloth. Bring me a piece of cloth." तो महाराज ने बोला कि मुझे एक कपड़ा लेके आइए। And I put the cloth over the television. मैंने वो कपड़ा टीवी के ऊपर रख दिया। And I said, "You put the deities here because you're always looking in this direction." महाराज ने बोला कि आप विग्रह को यहीं पे रखिए क्योंकि आप हमेशा इसी तरफ देखते रहते हैं। So, whether we physically do that, but the deity should be the center of our home, and the holy name should be the center of our life. And if we want to remember Krishna, then I always recommend the last thing you do in your day, for 1 hour, you hear about Krishna from Krishna book or some other stories about Krishna. And then the next morning you will very enthusiastically chant the holy name. तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि भगवान का नाम लीजिए, उनके बारे में सुनिए, और रात में सोने के पहले इस तरह से कर सकते हैं कि 1 घंटे कृष्ण के बारे में सुनिए, कृष्ण पुस्तक पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले दिन सुबह जब उठेंगे तो भगवान का नाम लेने की बहुत इच्छा होगी। No Facebook at the end of the day. रात में सोते समय फेसबुक नहीं देखना चाहिए। Only if the Facebook is about Krishna. केवल एक ही फेसबुक देखना चाहिए कृष्ण के बारे में। Like some people, they have Facebook group and they read at night. That's very good. कुछ लोगों का पास फेसबुक ग्रुप होता है, वो रात में कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो वो अच्छा है, ठीक है वो। But actually, my experience is that every technology that comes out is maybe 10% beneficial and 90% destructive. मेरा अनुभव इस तरह से है कि कोई भी ऐसी तकनीकी निकल के आती है, वो केवल 10% ही अच्छी होती है, 10% अच्छे कार्यों में उपयोग होती है, 90% विनाशकारी कार्यों में उपयोग होती है। And Facebook is one of the leaders. फेसबुक उनमें से एक बहुत बड़ा लीडर है, नेता है। Yes. Hare Krishna. So my question goes in 2 parts. The first is, how can someone quickly develop the eyesight or to see the real Vrindavan Dham as it is and not just materially? And second is, how can I know that all my bad karmas are burned by chanting? तो 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसी आंखें कैसे प्राप्त की जाएं जिससे हम वृंदावन का वास्तविक दर्शन कर सकें, और मुझे दूसरा प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सारे पाप कर्म जल के खत्म हो चुके हैं। Lord Brahma says, "Karman nirdahati kintu cha bhakti bhajan," that all of our karma is burnt up automatically in Krishna bhajan. We're not trying to burn up karma. We're just trying to worship Krishna. And then, as we just said, Krishna bhakti, koila sarva karma krita hoy. Everything will be taken care of. If you put Krishna bhakti first, then everything else will be taken care of automatically. ब्रह्मा जी बताते हैं कि कर्माणि निर्धरति किंतु च भक्ति भाजन, कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम केवल कर्मों को जलाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं,
हम कृष्ण भक्ति करते हैं, बाकी सारे कार्य भगवान कृष्ण करते हैं। तो हमें ये सोच के भक्ति नहीं करना चाहिए कि मैं अपने कर्मों को जलाऊंगा। हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए, बाकी सारा कार्य भगवान कृष्ण देखेंगे। And wherever we put Krishna's deity, if we worship the deity with faith and devotion, that becomes Vrindavan. Vrindavan is not a physical place. Vrindavan is a state of consciousness. और जहाँ भी हम भगवान कृष्ण के विग्रहों को रखकर गंभीरतापूर्वक उनकी सेवा करते हैं, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। क्योंकि वृंदावन कोई एक स्थान नहीं है, जिस भी स्थान में भगवान कृष्ण की सेवा अच्छे से होती है वो वृंदावन कहलाता है। It's very difficult to be in Vrindavan and very easy at the same time. वृंदावन में रहना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। It's very difficult if we think that we can go to Vrindavan just by, as Prabhupada said, by buying a ticket, train ticket, or for me, airplane ticket, for you, train ticket. ये वृंदावन बहुत कठिन होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम टिकट खरीद के वृंदावन जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। But if we're thinking about Krishna, then everywhere becomes Vrindavan. अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं तो हर स्थान वृंदावन बन जाता है। It's like Lord Chaitanya, he showed when he was in Jagannath Puri, he could only see Vrindavan. चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाओं में दिखाया कि जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो वो केवल वृंदावन का दर्शन करते थे। Of course, Vrindavan is contained within Jagannath Puri. वृंदावन जगन्नाथपुरी के अंदर में उपस्थित है। Gundicha, that is Vrindavan. No? गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन को सूचित करता है। One time Srila Prabhupada was in Andhra Pradesh, and he was walking with the devotees. And one devotee said, because Andhra has a lot of these big rocks, mountains with big rocks, and he said, Prabhupada, here it looks just like Southern California. एक बार प्रभुपाद जी दक्षिण भारत में अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें, बड़ी-बड़ी चट्टानें और हिल, छोटे-छोटे पहाड़ जैसे हैं। तो उस शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद ये स्थान देख के, ये पहाड़ देख के ऐसा लगता है कि हम दक्षिण कैलिफोर्निया में हैं। And Prabhupada said, for you, everything will look like Southern California. प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे लिए सब कुछ दक्षिण कैलिफोर्निया जैसा ही लगेगा। And then Prabhupada went like this, and for me, everything is like Vrindavan. और मेरे लिए सब कुछ वृंदावन के जैसा है। So, we just have to strictly follow Srila Prabhupada, and everything will become like the spiritual world. हम केवल श्री प्रभुपाद के निर्देशों को बहुत गंभीरता से पालन करेंगे तो सब कुछ आध्यात्मिक संसार के समान लगेगा। As you explained that we should keep Bhagavad Gita as it is, we should not adulterate. So how we understand the incident of Arjuna Acharya, and nowadays we are seeing that so many modern techniques or ways of preaching are devotees developing that with Bhagavad Gita, mind control or business tricks or something, this kind of things, preachers or some devotees, they are taking this kind of way of preaching. So how we should think with these techniques or whatever method of preaching they are developing? प्रश्न है कि जैसे महाराज ने बताया कि भगवद गीता को हमें परिवर्तित या अपने मानसिक अवधारणा के आधार पर नहीं समझना चाहिए। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग भगवद गीता के आधार पर अलग अलग वस्तुएं सिखाते हैं, जैसे मन का नियंत्रण और व्यापार कैसे अच्छे से करें। तो ये किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और ये सही है या गलत है? Everything, it depends on what is the motive of the devotee. ये इससे समझ सकते हैं कि उस भक्त का हेतु क्या है। If a devotee is trying to bring someone to Bhagavad Gita through some psychological process or something, if the goal is that they understand Gita, then they may use that as a bridge, as a technique to get to Krishna. अगर कोई भक्त भगवद गीता के द्वारा किसी को मतलब उस भगवद गीता को एक ब्रिज के जैसा उपयोग करके, पुल के जैसा उपयोग करके व्यक्ति को
भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको ऐसा समझा जा सकता है। So that may be all right. तो वो ठीक भी हो सकता है। But if someone thinks that Bhagavad Gita has some other conclusion, वो कंफ्यूज मतलब भ्रमित है। ultimately everything depends on our motive. What is our motive? वास्तविकता में सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि हमारा हेतु, हमारी इच्छा क्या है। Savai pum samparo dharmo yato bhaktir aduk saje ahaituk. So it must be ahituki, must be no motive other than pleasing Krishna. तो जब हम भक्ति करते हैं उसका उद्देश्य होता है ये अहेतुकी होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई हेतु नहीं होना चाहिए। And apratyata, it must be constant, no deviation. निरंतर होनी चाहिए, इसमें कोई भी अलग दूसरा प्रभाव नहीं होना चाहिए। Shrotriyam brahmanishtam. We want to hear carefully and put it into practice just as we have heard. हमें इसको ध्यान से सुनना है और जो सुना है उसको ध्यानपूर्वक उपयोग में लाना है। So nowadays we're dealing with a very contaminated world, आज के समय में हम बहुत दूसरे समाज के बीच में रह रहे हैं, especially the West, but India is trying to catch up also. विशेष रूप से पाश्चात्य देश, परंतु अभी भारत भी पाश्चात्य देशों की बराबरी करना चाहता है। The fortunate thing in India is that the influence of Krishna appearing here so many different ways as Krishna, Ram, as all the different incarnations, the whole atmosphere of India is permeated with Krishna Leela. तो भारत का सौभाग्य ये है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे इतनी बार अलग-अलग रूपों में अवतरित हुए हैं कि यहाँ पे वातावरण कृष्ण लीला से ओतप्रोत है। Prabhupada says this very nicely in the 10th canto, 1st chapter, text number 4. He says, even though India has, so much influence of Maya. 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 4वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि भारत बहुत कुछ माया के प्रभाव में है, He said, still, if there is some a spiritual event, thousands of people will come. परंतु तब भी भारत में अगर कोई आध्यात्मिक कार्य होता है तो हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। And everybody knows that they're not this body. वो सभी लोग जानते हैं कि वे शरीर नहीं है। But in the West, everybody thinks they are this body. पाश्चात्य देशों में सभी ये सोचते हैं कि वे शरीर है। And anyone who tells them to the contrary interferes with their freedom. Anyone who tells them something different is interfering with their freedom. अगर कोई इस तथ्य के अलावा कुछ और बोलता है तो वो बोलते हैं कि हमारी स्वतंत्रता में व्यवधान है। So in spite of so many politicians and different kinds of people here in India trying to convince the public that no, we are behind because we have too much of this spiritual mythology. भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये धर्म को पालन करते हैं इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। It is in the genes of the people to be spiritual. तो हालांकि बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं परंतु भारतीय लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हम आध्यात्मिक हैं, वो निकल नहीं सकता। Yeah, everyone in India has been genetically modified. भारत में लोग जेनेटिक You are all GMO. अनुवांशिक रूप से वो आध्यात्मिक हैं। You are all GMO bhaktas. No. Okay. Hare Krishna Maharaj. If the soul leaves the body before initiation, will it be going back to Godhead? Is there a slightest chance? अगर दीक्षा के होने के पहले आत्मा शरीर त्याग करती है तो उसको भगवत धाम जाने की कितना चांस है? Going back to Godhead doesn't depend on initiation. भगवत धाम जाना दीक्षा पे निर्भर नहीं करता। Initiation means to begin. दीक्षा का मतलब प्रारंभ करना। Then we have to follow up. उसके बाद हमें पालन करते रहना है। Just like I was saying, the two fingers of Yashoda Mai, one is the Lord's mercy and the other one is how the devotee responds to that mercy. जैसे मैं बता रहा था दो उंगलियों के बारे में, एक भगवान की कृपा और दूसरा एक भक्त उस कृपा को कैसे स्वीकार करता है। So initiation means that we get the opportunity
to begin our spiritual life. तो दीक्षा का मतलब है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करने का हमें मौका मिलता है। But from that point on, we have to be very attentive to accept the Krishna's mercy as it comes. परंतु उस बिंदु के बाद से हमें कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said that chanting the holy name doesn't depend on initiation. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि नाम का जप दीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता। Jamya was not initiated. No. अजामिल दीक्षित नहीं था। So, but he received the mercy of the holy name. तो उनको नाम की कृपा मिली। Initiation, Prabhupada explains this in 15th chapter of Madhya Lila, that the initiation allows us to purify our consciousness so that we can receive the mercy of the holy name. प्रभुपाद जी मध्य लीला के पहले अध्याय में समझाते हैं कि दीक्षा हमारी चेतना को शुद्ध करने में मदद करता है जिससे कि हम कृष्ण की कृपा को स्वीकार कर सकें। But initiation is not a diploma. पर ये दीक्षा कोई डिप्लोमा की रस्म नहीं है। It's an opportunity to take advantage of Krishna's mercy. ये एक अवसर है कि हम कृष्ण की कृपा का पूरा लाभ उठा सकें। From the point of initiation on, it depends on how faithful we are. दीक्षा के प्राप्त होने के बाद से हमारी प्रक्रियाओं से पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है। Yes. One last question. Okay. Yes. Oh, yes. Like. Can you share some special moment? You speak up a little more. Can you share some special moment with you and Sri? Can you repeat प्रश्न that? है कि क्या आप No, I just repeat Your that. special moment with Sri Prabhupada. प्रश्न है Your कि special moment with Sri Prabhupada. That is what the question. When did I see Prabhupada? Is there any special pastime with Srila Prabhupada that you remember the most? My pastime? I didn't have so much pastime. I just saw Srila Prabhupada in 1976 at the Mayapur festival and the Vrindavan festival when he gave me initiation in Vrindavan. And so it was like 1 month I was, had some opportunity to do some service for Prabhupada. तो मैंने प्रभुपाद जी को 1976 में मायापुर वृंदावन उत्सव में देखा। प्रभुपाद जी ने उस समय मुझे दीक्षा दी और फिर 1 महीने तक प्रभुपाद जी की कुछ सेवा करने का मौका मिला। Before that, I was in the army. I couldn't go and see Prabhupada. उसके पहले मैं मिलिट्री में आर्मी में था तो मैं प्रभुपाद से मिलने के लिए नहीं जा पाया। They wouldn't let me leave. No. वो मुझे जाने नहीं देते थे। But as it says, Tulayama lavanapi naswargam napumabhavam bhagavat bhakti sangasya martyanam itutashaha. That one fraction of a second of association with a Bhagavat Sangi, with a devotee, an intimate devotee of the Lord, if we take advantage of it, is greater than going to the heavenly planets or achieving liberation. जैसे कि बताया जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्त का संग अगर एक क्षण के लिए भी हो तो वो स्वर्ग लोक में जाने या मुक्ति से भी ज़्यादा बड़ा होता है। So thank you all very much for your kind attention. It was very, very nice to get your association, and I hope that Krishna allows me to do the same in the future. Hare Krishna. सभी के सभी बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि हम भगवान कृष्ण मुझे फिर से अवसर प्रदान करें कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। Srila Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताय गौर प्रेमानंदी परम पूज्य गुरुप्रसाद स्वामी महाराज की तो I was asking that I am brahmachari. I should